Good morning everyone. Jai Shri Krishna. How are you all? I hope all are you good. Today I am going to teaching you the very important subject maths. Okay? You have learned in your previous class so many things: hexagonal, pentagonal, octagonal, and convex, concave, regular, irregular, so many. Okay, here shortly we will discuss, then start our next topic. Okay, so first of all, first क्या पढ़ा था? Classifications of polygon. Classifications of polygons, different types of classifications of polygons में different example थे: hexagonal, pentagonal, octagonal, triangle, square, so many. And what is polygon? Polygon, what is polygon? Please can you tell me now? A simple closed curve made up of aligned segment is called polygon. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ओके, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था. सेकेंड वन इज व्हाट इज डायगोनल्स. व्हाट इज डायगोनल्स? एग्जैक्टली राइट. A diagonal, a line segment to connecting consecutive vertices that is called to diagonals. Okay. सो हमने बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स के भी बारे में पढ़े थे. ओके, हियर इज द डायगोनल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण. ओके, एंड सेकेंड वन इज पेंटागोनल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचभुज, जिसकी 5 साइड्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4. ओके, and third one is इकॉन, जिसके है ना 10 साइड्स होते हैं, मीन्स कि उसको हिंदी में बोलते हैं 10 भुजाओं वाला. ओके, इतने सब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगॉन्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर. ओके, so today we are going to interior and exterior. And second one is interior. Okay, so what is interior and what is exterior? Okay, exteriors, what is exterior? Exteriors all sides have in 360. Okay, exteriors all sides value are 360. And what is interior? Interiors all sides value are 180. Okay, so guys, today we will learn about exterior and interior. Exteriors all sides value 360 and interiors all sides value is 180. Okay, so here we will discuss some related to exterior and interior. Okay, so guys, here we will discuss interior and exterior. उससे रिलेटेड अब हम कुछ सम देखेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे. ओके, फाइंड द एक्स इन फॉलोइंग
questions. Okay, find the x in following questions. Okay. So guys, here the sum of exterior value. You know that the exterior's all side value is 360. Okay, exterior all sides value of 360. Okay, here first one is 125, second 125 and x1 is find out. x हमें फाइंड करना है. ओके, 125 बी का दिया हुआ है, सी का 125 दिया हुआ है एंड ए का कुछ भी नहीं, मीन्स कि x हमको फाइंड करना है. ओके, एक्सटीरियर का ऑल साइड होता है 360. ओके, तो 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 250. Okay, 125 is equal to 250. So exterior value 360 minus 250 is equal to 110. Understand these questions? ये क्वेश्चन समझ में आया? एक्सटीरियर का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये सम है. ओके, एक्सटीरियर की ऑल साइड्स की वैल्यू होती है सबकी 360. उसमें हमको 1 and 2 वैल्यू दी हुई है और x हमको फाइंड आउट करना है. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है तो फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस करना और एक्सटीरियर वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमें अपनी x मिल जाएगा. ओके, नाउ सेकंड वन इज okay, A is 100, B is x and C is 110. So find out x. Okay, exteriors all value is equal to 360. Okay, 360 is equal to 100 plus x plus 110. X is equal to 360 minus 210. So x is equal to 250. Okay, understand? So now एक्सटीरियर का डेफिनेशन हमने देखा था, इंटीरियर का डेफिनेशन देखा था. एक्सटीरियर के रिलेटेड हमने कुछ सम किए. नाउ and interiors. Okay, interiors all sides value is 180 degree. Okay, interiors all sides value is 180. Okay,
exterior is 360, interior is 180. Find out the x. Okay. A, B, C. A is 50 and B is 70. C is x. Okay. Here x, P, Q and R. R's value is 90 and Q is, find x, and P is 70. Okay. Interiors all value is equal to 180. Okay. 180 is equal to 70 plus 90 plus x. Okay. 160x. So x is equal to 180 minus 160. Okay. So x is a 20. Okay. So now our x is 20. Okay. Then second question. A is 50 and B is 70 and C is find out x. No one. Okay. So interiors all value is 180. A plus B plus C. Okay. A is 50. B is 70. C is x. 180. Okay. 180. 120x. X is equal to 180 minus 120. Okay. So x is equal to 60. Our second value is find out 60. Okay. Now third question is find the exterior. Find the exterior of sides angle. Okay. First one is 9 sides. Second one is 15 sides. And third one is 18 sides. And fourth one is 4 sides. Okay. First questions. Now 9 sides. Okay. Exteriors value find out. Exteriors all value. Exteriors all value is equal to 360. Okay. Here 9 sides. Okay. 360 is equal to 9 sides. 360 upon में 9. 9 म्हणजे 9. 9 2 जा 18. 9 3 जा 27. 9 4 जा 36. 36. So here our answer is 40. Okay. 40 angles. Now second one is 15 sides. Okay. 15 sides. Exteriors all value 360 upon 15. Okay. 15 1 जा 15. 15 2 जा 30 and 6. 15 4 जा 60. Now our second value is 24. Okay. Now third question 18 side. Exteriors all value 360 upon में 18. Okay. 18 1 जा 18. 18 2 जा 36. Our third value is 20. Okay. Now four sides. Okay. Four sides. 360 upon 4. 4 9 जा
36. Our fourth and last value is 90. Okay. First value is 40, second is 24, third one is 20, fourth one is 90. Okay. नाउ हमने एक्सटीरियर के एग्जांपल्स देखे, सम्स देखे, अब इंटीरियर्स के देखेंगे. ओके. फाइंड द interior angles. Okay, interior angles. Okay, first one is 9 sides, second 4 sides, and third 3 sides, and fourth one 6 sides, and fifth one is 18 sides, and sixth one is 10 sides. Okay. So first one is 9 sides. Interiors all value is equal to 180. Okay. 180 upon 9. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. Our first value is find out 20. Second one is 4 sides. Okay. All value 80, 180 upon 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 16, 4 3 जा 16. Okay, to इधर 4 5 जा 20, 3.5. Okay, now 3 sides 180 upon our 3 sides. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 16, 3 6 जा 18. So 60. Our third value is 60. Fourth one is 180 upon में 6. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. Our fourth value is 30. And fifth value is 18. 18 10 जा 8, 180. Our fifth value is find out 10. Now 10 sides 180 upon में 10. Our sixth value is finally 18. Okay, first value find out 20, second 35, third 60, fourth 30, fifth 10, and sixth 18. Okay, here exterior and interior example is completed now. Okay. Now our next topic is kinds of quadrilaters. Okay. Next topic is kinds of quadrilaters. There are 7 types of quadrilaters. Okay. First one is parallelogram. Second one is rhombus. Third one is kite. Fourth one is rectangle. Fifth one is trapezoid. Sixth one is square. And 7 isolates. Okay. First parallelogram का drawing. Second rhombus drawing. Third kite drawing. And rectangle, trapezoid, square, and isolates. Okay. There are 7 types of quadrilaters: parallelogram, rhombus, kite, rectangle, trapezoid, square, and isolated. Okay. Here our today's all topic is completed now. Here I am asking some following question. Anyone who know that, let me know. Okay. सुनाओ. टुडे के सेशन में आज हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके. ब्लैंक इज एक्सटीरियर वैल्यू. व्हाट इज द एक्सटीरियर वैल्यू? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था व्हाट इज एक्सटीरियर वैल्यू. एक्सटीरियर्स ऑल साइड्स वैल्यू
is equal to 360 degree. Very good. And what is interior's all value is blank? Raise your hand. 180 degree. Very good. Excellent. 180 degree is interior's all value. Okay. Find the exterior's value. Okay. Exterior's value हमें पता है exterior's के all sides के होते हैं 360 upon 5. Okay. 5 and 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35. Okay. 5 7 जा 35 and 5 2 जा 10. First value is 72. Okay. Now second value is 10. 360 upon 10. Okay. 10 3 जा 30. 10 6 जा 60. Now second value is our 36. Now third question is 360 upon 50. Okay. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60. Now fourth one is 24. Sixth one is 6 sides. Okay. 360 upon. Now last one is 360. 6 6 ja 36. Our last value is 60. Okay. So guys, today's session is completed now. Here I am asking some questions. आज के सेशन में जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सटीरियर. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटीरियर. एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्वाड्रिलेटर्स. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी sides of triangle. Okay. So today's session is completed now. Thank you. Jai Shri Krishna.